Hey guys, this is Evewin Lakra. So what I have over here with me is a platter of spices, mistress of spices. Here we have red chili, dry red chili, methi dana, saunf, fennel. This is the ajwain. This is the GOTA-HALDI. This is KALA-JEERA and golki or black pepper. And this is mustard seed, and this is raw mango, and the main ingredient is this sarson ka tel or mustard oil. Here we have the haldi, gota haldi, saunf, ajwain and methi dana again, and few raw mangoes, and this is the outcome of the raw mango or mango pickles, कच्चे आम का टेस्टी घर पर बना अचार. Pickle is called Aachar in Hindi. Very tasty and very yummy. You can eat the Aachar with rotis or anything, and it is very tasty. So this is how we made this tasty mango pickle this time. खट्टा अचार का आम का अचार, खट्टे आम का अचार, with the help of these wonderful spices and of course सरसों का तेल. सरसों का तेल आम के अचार के लिए. मैंने घर पर बनाया है कच्चे आम का स्वादिष्ट अचार. मैंने आम के अचार बनाने के लिए ये सब मसाले इस्तेमाल किया है. इसमें है हल्दी, अजवाइन, सौंफ, काला जीरा, गोलकी, सरसों और लाल मिर्च, सूखा मिर्च और ये आम. और सबसे मेन इंग्रेडिएंट क्या है आपके अचार का? सरसों का तेल. आम का मौसम आया, अचार की खुशबू लाया. I love tasty homemade आम का अचार, raw mango pickle. घर पर बना आम का अचार. We love it. Very tasty. I love it. आम का अचार, मीठा अचार, खट्टा अचार, आम का